एंड वेलकम। मेरा नाम है रितमा पाठक और ये है इंडियन T20 लीग का क्वालिफायर 1, जहां डेयरिंग गुजरात भिड़ेंगे डिटरमाइंड राजस्थान के खिलाफ। मेरे साथ है वसीम जाफर। दिस इज नॉट जस्ट क्रिकेट, पार्ट बाय sky247.net। और मैं आपको बता दूं कि अपने इंप्रेसिव फॉर्म के बाद गुजरात हैव बुक्ड अ प्लेस ऑफ कोर्स ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, फॉलोड बाय राजस्थान, जो अपने दृढ़ निश्चय से यहां तक पहुंचे हैं। सवाल ये है कि क्या गुजरात अपने होम ग्राउंड पर अपने डेब्यू सीजन में खेल पाएंगे या राजस्थान जो है आज ईडन गार्डन्स में ये मुकाबला जीतेंगे। इन सारे सवालों का जवाब जो है वसीम सर देंगे। वसीम सर, गुजरात या राजस्थान? Actually, Gujarat has been very very impressive. There's no doubt about it. जिस तरह से उन्होंने अपने पहले सीजन में खेला है, जब वो ऑक्शन से बाहर आए थे रिद्धिमा, तो मुझे ऐसा लगा था कि थोड़ी वीक टीम है। हार्दिक पांड्या का कुछ पता नहीं है कि हाउ विल रिएक्ट टू बैटिंग एट नंबर 4, बॉलिंग करेंगे नहीं करेंगे, बट दे हैव एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। Their bowling has been one of the best in the tournament. They have been lucky in the 3-4 games. There's no doubt. When they've chased, they've literally won in the last ball, couple of games. But they played brilliant cricket. We got to give credit to them. Rajasthan have been outstanding. I mean, they have been first time they've qualified after 2011. First time I would say कि ऑक्शन में जाके अच्छी टीम चुनी है, and everything has worked for them. Their batting has been outstanding. Josh Butler has been outstanding. The way Sanju Samson has led the team, they must be very happy about it. And their bowling we have talked about, one of the best bowling attacks along with Gujarat. So yeah, I mean it's going to be a very very tough game. I think the conditions will play a lot of part in it, क्योंकि overcast है, पता नहीं बारिश होती नहीं होती, do we get a full game? I think anybody who wins the toss, Riddhima, they look to bowl first and exploit the condition. But I am favoring a little bit towards Rajasthan. I'm happy to see them after a long time in the playoffs. And the great Shane Warne, they need to do something. Yeah. Sure. Look who's joined us in the house. We've got Nikhil Chopra. What is the status? चल क्या रहा है ईडन गार्डन्स में? क्या है, बारिश हो रही नहीं हो रही है? गुड इवनिंग। देखिए सवेरे बारिश हुई थी, फिर अच्छी बात ये कि कल की वजह बारिश भी हुई, लेकिन आज अच्छी बात ये हुई रिजवा कि कुछ देर के लिए धूप खिली थी, कोई 3-3:30 के करीब वहां पे धूप अच्छी खासी खिली थी। बट जो वहां से पता चला कि अच्छी खासी बारिश की वजह से आउटफील्ड काफी गीला है। और मजे की बात कह लीजिए, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज है। अगर मान लीजिए एक भी बॉल नहीं होती, एक भी गेंद नहीं होती बारिश के चलते, कुछ खुदा ना खास्ता अगर ऐसा होता है, सो जो टीम टॉप पे थी पॉइंट्स टेबल पे वो आगे निकल जाएगी। भाई 1 और 2 में फर्क नहीं पड़ेगा, दूसरी आपको राजस्थान को एक और मुकाबला मिलेगा, वो क्वालिफायर 2 में जाएंगे। लेकिन अगर कल ऐसा होता तब दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि 1 और 2 में अगर ऐसा होता है तो दोनों में से एक टीम को एक अतिरिक्त मुकाबला मिल जाता अगर हार भी जाती है। लेकिन 3 और 4 के लिए जो आखिरी टीम होगी उसके लिए कहानी वहीं समाप्त। तो ये बारिश नहीं होनी चाहिए। आपको पता ना किसके लिए कह रहा हूँ। बिल्कुल 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 मुझे पता है। चलिए हम अपने दर्शकों को एक बार दिखा दें कि आगे का रास्ता, आगे कुछ दिन कैसे होने वाले हैं। Who's going to play whom? Qualifier 1, Qualifier 2, Eliminators। तो ये रहा Qualifier 1 जो कि आज है, वो है गुजरात वर्सेस राजस्थान, जो कि हो रहा है ईडन गार्डन्स में। फिर एलिमिनेटर होगा लखनऊ और बैंगलोर। फिर है Qualifier 2 जो कि लूजर ऑफ द फर्स्ट क्वालिफायर वर्सेस द विनर ऑफ द एलिमिनेटर। और फिर होगा फाइनल अहमदाबाद में, जो कि है विनर ऑफ द फर्स्ट वर्सेस विनर ऑफ Qualifier 2। तो ये है सिलसिला। और देखना ये है कि बारिश जो है बीच में अड़ंगा डालेगा या नहीं। बट निखिल सर, 2008 की कहानी राजस्थान जरूर रिपीट करना चाहेगा। और जैसे कि वसीम ने बिल्कुल करेक्टली कहा, that would also want to pay a tribute to Shane Warne. without a doubt, absolutely। और जो मेहनत उन्होंने ऑक्शन टेबल पे करी थी रिद्धिमा, वो नजर आती है। जिस तरीके की अगर आप उनकी टीम देखते हैं, शुरुआत में वो जॉस बटलर के रन, संजू सैमसन जिस तरीके से खेल रहे थे, देवदत्त, अब सेकंड फेज में जब यशस्वी जायसवाल वो पारी की शुरुआत दे रहे हैं, तो वो आपको बटलर की कमी जो है ना
कुछ हद तक नहीं वो खलने दे रहे, but tonight's the night. Is Butler going to serve another heart piping sizzling performance? That's the important key, because फ्रेश विकेट होगा बारिश के चलते, अगर पूरा दिन थोड़ा सा कवर्स शाम को लगाए हैं फिर हटाए गए हैं, थोड़ी सी नमी है, मोहम्मद शमी, लॉकी फर्गसन, गेंदबाजी बहुत मजबूत नजर आ रही है गुजरात की, तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग मुकाबला होगा। हम सब समझ रहे हैं कि 200 वाला चेस या 180 वाला चेस, सो डोंट बी जस्ट लिटिल सरप्राइज व्हेन द पेस बॉलर्स कम एंड लुक टू सरप्राइज। और दोनों टीमों में, गुजरात और राजस्थान, ड्यूरिंग द लीग फेज ऑल्सो गुजरात गॉट द अपर हैंड, बट उस गेम में ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे जी। सो यू नो वो वापसी कर रहे होंगे, एंड ये वो मुकाबला 87 नवाद जी वो 4 नंबर पे आए थे, और एक वो अच्छी साझेदारी भी थी अभिनव मनोहर के साथ, डेविड मिलर ने नीचे आके फिर वो 31 रन बनाए थे 14 गेंदों में, सो दैट गॉट देम टू 192। एंड वहां पे फिर लॉकी, हार्दिक पांड्या ने एक विकेट जरूर चटकाई थी, यश दयाल आल्सो हैड अ गुड स्पेल, लॉकी हैड दैट 3 विकेट स्पेल दैट मेड अ बिग डिफरेंस, बट वहां पे राजस्थान के लिए ट्रेंट बोल्ट वाज मिसिंग आउट ऑन दैट गेम, सो interesting. I hope he's playing. We want to see a good piping hot contest. This is the playoff. You want to sell? You want to save the best. An air show. I want to see an air show in Eden Gardens. That's what I want to see, and I want to see whether Butler will be at his service or no. That's the thing. But since the fact कि गुजरात ने एक भी प्लेऑफ, ये जो टीम है गुजरात की, इन्होंने एक भी प्लेऑफ नहीं खेला. They've got no playoff baggage. Whereas, of course, Rajasthan has experience. So, ये क्या, that the fact that they don't have playoff baggage, is it a boon or a curse for this team? I think गुजरात ने नहीं खेला है, but गुजरात के प्लेयर्स ने खेला है. Demand for different franchise, so that will serve them in good stead. Obviously, Gujarat playing in the first season, तो वो कहाँ से होगा? But the way they have played, they played some nerve-wracking cricket. And the good thing is, Ridhima, के different games में they've got different match winners, and that is something which is very good. That has been the standout. कि पहले 6-7 मैच में they had different man of the matches, 6-7 different man of the matches. That goes on to show कि they have got different players standing up every time. They are not dependent on 1 or 2 players. और यही story राजस्थान की भी रही. Even though Josh Butler has been an outstanding performer, but second half, Josh Butler hasn't performed to that expectation. But they've still qualified. They've still won games, which is a good thing to see. They've got Yajurinder Chahal, who won them the game. Ravi Ashwin. They've got Sanju Samson. Now Jaiswal has come to the party. Shimran Hetmeyer is back. So both the teams are pretty similar in a way. तो मुझे लगता है कि like you have said, Gujarat hasn't played a playoff game, but their players have played for different franchise. And that is going to be key, how they handle the pressure. And again, knowing that Kolkata में बारिश है, you might not see a very big heavy hitting game, so जहाँ पे थोड़ा सा दोनों ही टीम के fast bowlers will be on the party, so आपकी batsmanship किसकी अच्छी है, I think that is going to be very very key. Who handles that new ball well, who's not 20 or 30 for 3 at the start of the power play. I think वो will be very very important. Interesting. So जहाँ पे you've got a Gujarat, and like you very right, you mentioned that individual players have been at this stage, but as a group they've not been in the playoffs. Rajasthan वहीं पर इस स्टेज पर रह चुके हैं, तो ये जो historical results होते हैं निखिल, ये इसका कुछ असर होता है प्लेयर साइकी पर? I guess क्योंकि राजस्थान भी पहले काफी साल पहले वो प्लेऑफ में थे, वहां पे कितने खिलाड़ी आपके मौजूद थे कितने नहीं थे, वो बड़ा फर्क है. देखिए 2008 में चैंपियन, उसके बाद 2013 में तो वो 4 साल का गैप था, 5वें साल वहां पहुंचे, फिर 2 साल 1 साल का गैप था, फिर 2 साल का वो गैप था. सो कुछ खिलाड़ी जो तब से खेल रहे हैं, सो इट मेक्स अ लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस दैट कि आपको किस तरीके से अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखना है. बट व्हेन यू मेक इट टू द टॉप 2 साइड्स, you get another crack at going out there and putting your best foot forward, and it's going to be interesting because आप इससे पहले लीग फेज के जो जितने भी मुकाबले थे ना, सभी टीमें जो हैं वो आप महाराष्ट्र में खेल रहे थे, वो लाल मिट्टी और पुणे की वो काली मिट्टी में. अब आप कलकत्ता आए हैं, बारिश हो रही है,
कितनी टीमों को अभ्यास करने का मौका मिला है? डिड दे गो आउट देयर एंड गेट अ हिट मे बी इन द इंडोर्स? इंडोर और बाहर की पिचेस में जमीन आसमान का फर्क रहता है. Because it's been, I know for a fact it's been raining since yesterday, so I don't think the teams maybe got an opportunity to go out and get a hit, or were Yeah. they able to manage it or not. So this is going to be an interesting bet. But देखिए, अंत में रिद्धिमा मजे की बात मैं बताता हूँ, ये सब जितने भी खिलाड़ी हैं ना, विश्व भर के ये प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं, ये हर पिच पे खेले हुए हैं, ये हर सिचुएशन से निकले हुए हैं, और कुछ जो यंगस्टर्स हैं जो नए हैं, उनको संभालने के लिए ड्रेसिंग रूम में बहुत सीनियर्स हैं. So Correct. if the game goes on, we are in for a cracking encounter. Indeed, we are. We just want this game to go on. All right. So we've set the stage with our words. It's time for the numbers now to dictate the game that lies ahead. This is Numbers Tracker powered by Sky247.net. So Butler has had two halves in this season of the Indian T20 League. एक था उनका पहला भाग, फिर था दूसरा. पार्ट 1, पार्ट 2. आए आपको नंबर्स में दिखाएंगे पार्ट 1, पार्ट 2 कैसा रहा है. द फर्स्ट 7 games, द लास्ट 7 games. Here we go. So a strike rate of 162 in the first 7 games and a contrasting strike rate of 111 in the last 7. Average of 81, average of 19.71, Nikhil. 250s in the first 7, 1 in the last 7, and 0 centuries in the last 7. He had 2 of those in the first. ये contrasting fortunes इसी को बोलते हैं. बिल्कुल. और देखिए, जिस तरीके से वो पहले मुकाबलों में उन्होंने रन बनाए, आज भी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी अब तक इस प्रतियोगिता में वही है. एंड द गुड थिंग इज कि ये कुछ दिनों का जो ब्रेक मिला है ना, सो एज अ बैट्समैन यू आर लुकिंग टू से कि यार द वर्स्ट इज पास अगेन. You know, I need to get back and keep remembering what I was able to do, the number of hundreds I've got, and this is a fresh track. ये विकेट थकी नहीं होंगी. अगर कुछ थोड़ा सा बॉल मूव होता है वो मॉइस्चर के कारण, वो अलग बात है, वो फिर बराबरी का रहेगा हर बैट्समैन के लिए. बट एक चीज तो तय कि अगर इस बैट्समैन को स्टार्ट मिलता है तो किस तरीके से अपने स्टार्ट को एक बड़े स्कोर में तब्दील करके मुकाबला एक तरफ करना है, वो जॉस द बॉस है. बिकॉज ये जब रन बनाने को देखते हैं ना, तो ये हमेशा बॉलर से एक कदम आगे चलते हैं. He forces the bowlers to bowl at his strengths. Then the paddle sweep, then the Butler behind fine leg, short fine leg. He's playing all those shots and then he's expecting the bowler to just amends his line and length, फिर वो offside खोल देते हैं. So ये वो उस तरीके के खतरनाक खिलाड़ी हैं. वो पहले 12-14 गेंदे या पहले 20-25 रन वो जरूरी रहेंगे इनके लिए. नहीं, बिल्कुल. No, we know that if this man goes firing, we know how is he going to fire, and you know the kind of difference that it will make for his team. But Wasim, ये जो tweak होता है, that you change from your current form that is going on, and now that you need to perform on this stage, how do you tweak that? I've always wondered, how does a player actually tweak that over just one day? I think Ridhima, he won't be thinking that much. I mean, the best thing you can do is just go out there without any baggage. He's in a good form. There's no doubt about it. One good point Nikhil mentioned there, the wicket will be fresh. And if Butler goes out there and the ball is coming onto him nicely, and that is a good thing. He doesn't mind. क्योंकि अगर आपको पहला मैच भी याद हो जो पुणे में हुआ था, he got out on the first or second ball. भुवनेश्वर कुमार no ball था, and then from there on everything changed. He got 100 in that game. Even though that was also a fresh pitch, but it didn't affect him. Apart from that, no ball. So he doesn't mind a fresh pitch as long as the ball comes onto the bat. And when that happens and his first few shots, come along, then Butler is a dangerous customer. Even though सामने मोहम्मद शामी है, even लॉकी फर्ग्यूसन होंगे या हार्दिक होंगे या अज़ारी जोसेफ होंगे, I think if the ball is coming and hitting the bat in the middle for Josh Butler, that is going to be scary signs. So I think part of that problem was, the used pitches. जो second half में जो score नहीं बने, the ball didn't come on to the bat to his liking. Ball spin होने लग गया, थोड़ा slow आने लग गया. But playoffs में ऐसा नहीं होगा. Playoffs में you will get fresh pitches. जहाँ पे जैसे black soil में the ball comes on to the bat more, and I think he liked that. If he spends the first 10-15 balls at the crease, it's going to be dangerous signs for the opposite team. I wish Ridhima, like you saying ना, वो कोई I wish एक बटन होता. कैसे मैं बताता हूँ.
हाँ ओह म्यूट ऑन म्यूट अब आवाज आई ना। आई विश ऐसा बटन होता स्पोर्ट में कि भाई परफॉर्मेंस करनी है तो बटन ऑन कर लिया। देखिए आप अभ्यास करते हैं उसी जद्दोजहद से, उसी विश्वास से कि दिस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ माय लाइफ, एंड देन यू जस्ट गो आउट देयर एंड रिएक्ट टू सिचुएशन। दैट्स व्हाट यू ट्रेन फॉर। आई विश ऐसा कोई बटन होता। Well, all I can hope is that the team is pressing the right buttons. That's all I hope for. Now, let me show you matches. The fact that Wasim mentioned Shami. एक ये जो मैचअप है ये इंटरेस्टिंग होगा, बटलर वर्सेस शामी. कुछ नंबर्स हमारे पास. The question is who's going to, between the two of them, who's pressing the right buttons is the question. So here's some numbers. 30 balls, 40 runs. दो बार डिसमिस कर चुके हैं वो जॉस बटलर को, और एवरेज 20 स्ट्राइक रेट इनके अगेंस्ट इनकी 133 है. Who do you see this, in whose favor do you see this battle going, Nikhil? See, important to champion players, और ये आंकड़े हमेशा एक दूसरे को ना एक इनिंग में फेवर करते रहेंगे because they want to outdo the other person. Because मोहम्मद शमी का काम वही है, उनका रोल ये है कि हाथ में नया गेंद है, आप ऑपोजिशन का जो मेन प्लेयर है, जो आपको पता है कि अगर उनका दिन होगा तो वो मैच जिता के ले जाएंगे, लेकिन अगर वो आपके ऊपर हावी होते हैं तो वो 130 का 150 का स्ट्राइक रेट भी फिर वो कम होगा, बिकॉज जिस तरीके के फॉर्म में हमने स्टार्ट में बटलर को देखा था, बट वी ऑल्सो सॉ शमी get the better of people like KL Rahul in the innings, and he gets that ball to do something off the wicket, and he's got that very subtle in cutter as well, जो बटलर को परेशान आप कर सकते हैं. सो ये बैटल जो है ना ये बहुत बढ़िया है, ये हर रोज आप नई बैटल देखते हैं, because two champions are at one another. That's what you want to see. That's right. और कहानी में एक ट्विस्ट भी है वैसे, that Shami is going to be playing on his home ground. Will that be an added advantage? बिल्कुल बिल्कुल, और कंडीशंस एक्चुअली शामी को हेल्प करेंगे. रिद्धिमा, कोलकाता जो the new Kolkata pitches are helping the fast bowlers, so he'll enjoy bowling there, and I won't be surprised that he bowls 3 overs up front in the power play to pick up wickets, because उसके बाद में उनके पास लॉकी है, हार्दिक can bowl, so they've got other options. Yes, Dayal is there also. So I won't be surprised that he goes and bowls 3 overs up front just to pick up that first 2-3 wickets, important wickets, and the ball will swing without a doubt. Overcast condition hai, there'll be pace, there'll be bounce. So I think conditions will favor a little bit to Shami, and I won't be surprised that Josh Butler just plays a waiting game at the start and then cut loose if he survives that initial period. Right. All right, so that is a matchup that we are looking forward to. But there's another player जिसके बारे में, if I had to make a comparison, वो होगा एक on all-purpose Swiss Army knife. क्योंकि आप उन्हें जिस रोल में डालें वो उस रोल में जाके परफॉर्म करें, वो है R. Ashwin. Nikhil, with both bat and ball, the man has had a story of evolution. It's incredible जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस लगातार वो दे रहे हैं. वो देखिए पावर प्ले में 10 इनिंग में वो 3 विकेट, बीच में आके विकेट चटकाना, यानी कि आप जो अंतिम ओवर्स होते हैं ना, देन एज अ बॉलर यू मेक श्योर कि नया बैट्समैन आता है, सो बाकी बॉलर्स के लिए काम आसान हो जाता है. नन ऑफ द बॉलर्स सफर बॉलिंग टू अ सेट बैट्समैन. तो ये विकेट बीच में चटकाना बहुत फर्क डालता है. बैटिंग में आप देखिए 3 नंबर पे आए, उन्होंने रन बनाए हैं, बीच में आके उन्होंने रन बनाए हैं, और डेथ में आके अब वो सीख गए कि तेजी से रन भी किस तरीके से बनाने हैं. डेथ में आके वो 178 के स्ट्राइक रेट से वो 71 रन बनाए, 35 की उनकी वो औसत है. सो ही इज बिकम अ मैन फॉर ऑल सीजन. और हम लोग बात करते हैं कितने उनके पास अब बॉलिंग के वेरिएशन हो गए हैं रिद्धिमा, दैट ही शुड बी ऑल्सो नाउ बीइंग स्टार्टिंग टू बी कॉल्ड एज अ मिस्ट्री स्पिनर. वो कैरम गेंद, ऑफ स्पिन, वो ऊपर से वो वैसे डालने वाली गेंदें. So, that is something what you want to see from one of your senior players. And clearly, he's probably having the best season of his life this season. इस साल ये प्रतियोगिता में चाहे गेंदबाजी हो, चाहे वो रन बनाना हो, 3 नंबर पे बीच में डेथ में पिछला मुकाबला आके उन्होंने वो तेजी से रन बना के अपनी टीम को मैच जिताया. So, it's one of those seasons that you'll never forget. Yes, and the kind of matches that he plays, the kind of finisher he's anchoring also. He's also working as a finisher. Wasim, the various roles that the man has taken up for the team. बिल्कुल, and he is like a man possessed. चाहे आप उनको पावर प्ले में बॉल डला दो, मिडिल ओवर्स पे he's come and picked up wickets, और बैटिंग में भी नंबर 3 पे आके 50 बनाए हैं.
और जिस तरह से लास्ट मैच जीता है, if he had not played that knock, they won't have got that number 2 position. So he has had a terrific impact this season, and I think he keeps on proving people wrong. Sometimes when people say that finger spinners can't survive, then he goes on and develops this carom ball and he goes leg spin, and then the way he has improved his batting, I think you've got to give him credit. Whatever role, like you have said very correctly, whatever role you put him into, he just finds himself doing that very well. So he's been a revolution for Rajasthan, definitely. Alright, let's should get to the next player जिनके जर्सी का रंग बदल गया है लेकिन खेलने का ढंग नहीं बदला है. ये है युजवेंद्र चहल. And this is a matchup that I want to see up against Hardik Pandya and Miller. Here are the numbers. So it's Yuzvendra Chahal versus Hardik Pandya and Miller. These are the numbers. What does this tell you, Nikhil? Well, ये आंकड़े देखिए कि वो विकेट चटकाते हैं. किलर मिलर के खिलाफ भी उन्होंने 3 दफा उनको आउट किया है और देखिए 3 दफा आउट किया है. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. औसत 11 किया है, सिर्फ 35 रन बनाए हैं. सो वो ज्यादा मार खाते नहीं और ये दोनों पावर स्ट्राइकर्स हैं, हार्दिक पांड्या और किलर मिलर. उनके खिलाफ ये गेंदबाजी करते हैं तो और बहुत चतुर हैं, जानते हैं कि मिलर की क्या रीच है, किस एरिया में मारने को देखते हैं, उनसे दूर गेंद रखते हैं. गुगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर लेफ्ट हैंडर को. हार्दिक पांड्या क्या वो स्ट्राइकिंग जोन्स हैं उनसे वो गेंद दूर रखते हैं. जस्ट गोस टू शो कि हर गेंद को डालने से पहले ना ये गेंदबाज सोच के डालता है. ही इज नॉट जस्ट समबडी हु कम्स रोल्स हिज आर्म ओवर एंड वेटिंग फॉर थिंग्स टू हैपन. ये उस किस्म के गेंदबाज हैं, गेंद डालने से पहले सोचते हैं सो दैट थिंग्स हैपन अकॉर्डिंग टू हिम. दैट्स द डिफरेंस. और यही कारण है कि इस साल उन्होंने इतनी सारी विकेटें चटकाई हैं और वो थोड़ी दिल पे चोट भी लगी थी ना, उनको रखा नहीं वापस. उनको रोका नहीं. बिल्कुल. Talking about comebacks and evolution. Yes, Rasim. Yeah, I think talking about the spinners actually, Ridhima, ये matches कोलकाता में हो रहे और कोलकाता में light goes on very quickly. It gets dark at 4:30. तो ड्यू का इफेक्ट भी होगा. I won't be surprised. ऐसा लग रहा है कि Sai Kishore gets dropped. From Gujarat Titans. You can't drop Yuzvendra Chahal, you can't drop Ravi Ashwin. But मुझे ऐसा लगता है you can't drop राशिद खान. तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्पिनर्स का रोल कितना इफेक्टिव होगा, स्पेशली इफ यू आर बॉलिंग इन द सेकंड हाफ, जहां पे ड्यू आ जाएगा, लाइट जल्दी चली जाती है, ड्यू का इफेक्ट होगा, एंड द विकेट फेवरिंग फास्ट बॉलर्स. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग टू सी के क्या स्ट्रेटजी रहती है, स्पेशली गुजरात टाइटंस की. डू दे प्ले साई किशोर और दे ऐड अनदर बैट्समैन, क्योंकि जब से हार्दिक पांड्या बॉलिंग करना शुरू किए हैं वी फील के थोड़ा सा एक बैट्समैन लाइट है गुजरात के लिए. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज इंटरेस्टिंग टू सी कि नाउ हार्दिक इज बॉलिंग, डू यू वांट टू ऐड अनदर बैट्समैन इनटू दैट लाइनअप, क्योंकि स्पिनर्स को मुझे नहीं लगता है कि इतनी, खास करके फिंगर स्पिनर्स को. सो दैट इज वन सिलेक्शन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि क्या करते हैं. ओके. स्पेशली अगर हम बात करें वेदर कंडीशन की, यहाँ पर सुबह अगर बारिश हुई तो फिर भी ड्यू फैक्टर रहेगा निकल? नहीं, अगर क्लाउडी रहता है तो रिदमा वो फिर वो ड्यू फॉर्म नहीं होती, बिकॉज दिन में गर्मी हो, शाम को जब तापमान गिरता है तो वो डिफरेंस के चलते वो ड्यू फॉर्म होता है. लेकिन अगर बारिश हो रही है, क्लाउडी है, तो फिर ड्यू नहीं रहेगा. लेकिन एक चीज है, जितनी बारिश हुई है और हैवी आउटफील्ड है, घास के तिनके थोड़ा सा फिर भी गीला है और हल्का मैदान में अगर हल्का सा भी कीचड़ होता है ना, तो पता है कि 2-3 ओवर बॉल मूव करेगा, जितनी बारी गेंद आउटफील्ड में जाएगा ना तो वो थोड़ा भारी हो जाएगा, तो इट विल नॉट मूव. पर देखना है कि कितना स्किड करके बॉल बैट पे आता है कि नहीं आता, बिकॉज अगर नमी है तो वो गेंद जब सिलाई पे गिरेगी तब वो इंडेंटेशन जब सेकंड इनिंग अगर वो सूखते हैं तो सेकंड इनिंग में फिर बैटिंग करने में दिक्कत हो जाएगी. सो दिस पिच आज के लिए बड़ी ही ट्रिकी होगी, क्योंकि आप पिच को रीड करेंगे, फिर जब सिक्का उछलेगा उसके बाद आपको वो फैसला लेना पड़ेगा कि आज क्या गेंदबाजी करें या पहले बल्लेबाजी करें. I think this will be a toss that captains might want to lose. बाकी हम देख लेंगे. बाकी so look, talking about the conditions that we have, I think the next clash is Shimron Hetmeyer's back. So Shimron Hetmeyer versus Rashid Khan, दो एक्सप्लोसिव प्लेयर्स एक दूसरे से भिड़ेंगे. इस कॉन्टेस्ट में क्या होगा? यहाँ पे
Rashid Khan versus Shimron Hetmyer, 42 balls में 62 runs. Hetmyer scored 4 wickets. 4 बार उन्हें dismiss कर चुके हैं वो. An average of 15.50 strike rate, I think 148. Rashid Khan, is on top of Shimron Hetmyer. That 15 का जो average है goes on to show कि Rashid Khan is all over Shimron Hetmyer. That strike rate is pretty good, but मुझे लगता है कि राशिद खान को थोड़ा संभालना होगा. शिमरन हेटमायर को probably शायद 16 ओवर तक हम देख सकते हैं कि शायद राशिद खान बॉलिंग करे या मे बी 17th ओवर. और शिमरन हेटमायर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर. वो जो फिनिशर का जो रोल है फॉर राजस्थान, he needs to bat till the end. So Rashid Khan is going to be very very important, not just for Shimran but for all the other batters also. मुझे लगता है कि no matter what the condition, Rashid Khan is going to be very very crucial player for Gujarat. Yeah. Yes, Nikhil, you want to add something? No, just कि देखिए शिमरन हेटमायर कभी जो स्ट्राइकिंग जोन है ना वो स्टंप्स के भीतर है. ही लाइक्स टू गो फ्रॉम डीप मिड विकेट टू डीप स्क्वायर लेग. वो राशिद खान ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं और उनकी ताकत भी वो गुगली है. तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग द डिलीवरीज फ्रॉम विद इन द स्टंप, आई वोंट बी सरप्राइज कि वो ऑफ स्टंप या चौथे स्टंप से ही वो गुगली डालने को देंगे. लेट हिम फेच इट आउट फ्रॉम साइड ऑफ स्टंप ताकि वो दिक्कतें रहें. सो दैट्स व्हाट आई थिंक कि थोड़ा सा दूर रखेंगे, मजा आएगा इस बैटल में भी. All right, so the toss is a few minutes away. तो जितने भी हमारे फैंटेसी गेमर्स हैं उनके लिए ये वाला सेगमेंट फैंटेसी ट्रैकर पावर्ड बाय Sky 247.net. Okay, this is a team picked by Nikhil, Captain Josh Butler. You seem to be having a lot of belief in the man today. Well, he's, the worst is past, the best is to come. He's going to serve us a piping hot performance. Butler, Shubman Gill, Hardik, Miller has been unstoppable in the power play. Yeah, incredible. Just तरीके वो fit and he's playing. Ravichandran Ashwin, bat, ball, looking to contribute. Rashid Khan, same bat, ball. Yuzi Chahal, पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट उनके सर के ऊपर. मोहम्मद शमी, ट्रेंट बोल्ट. ये वो मेरी टीम है जो मुझे लगता है कि आज मुकाबला जिताने को दिखाएंगे अपनी अपनी टीम को, लेकिन परफॉर्म करेंगे तो हमारी टीम जीतेगी. सो आई डोंट माइंड दैट. Wasim, would you change the captain and vice captain choice given the conditions in Kolkata? I'll be tempted to put Mohammad Shami in there as a captain, vice captain, just purely because of the conditions. Everything is so against the batters. अगर क्योंकि पता है नया बॉल में इतना सारा कुछ होने वाला है, तो I'll be tempted to probably go actually Hardik Pandya as a captain also because he gives you points on the both ends now that he's bowling and he's going to bat around the end of the power play. So you'll probably think about Hardik Pandya or maybe Mohammad Shami, who's going to be bowling more in the power play and use the conditions more. Yes. All right, so that's a little tip from us. आप जरूर ये टिप यूज करें अपनी टीम बनाते हुए और फीडबैक जरूर भेजें कि कैसे ये जो टिप्स है आपके काम में. अगर आप जीते तो हमें बताएं और just send some chocolate our way यार. Come on, हमारी वजह से आप इतना कुछ जीत रहे हैं. Okay. With that, let's talk about Sanju Samson's state of mind. Nikhil, the fact that after the India snub, what do you think would be his state of mind today? देखिए दो चीजें होती है रिदम. ऐसा कुछ होता है ना, like you just said, स्टब, कि आप अपने शेल में चले जाएं और you take it as a challenge and on your chin कि भैया मैं दिखाता हूँ, ये आपका लॉस है कि मैं आज परफॉर्म करके दिखाता हूँ. ये रन देखिए, स्ट्राइक रेट देखिए, संजू सैमसन 141 है. इफ यू कैन गो आउट देयर एंड गेट अ मैच विनिंग 70-80, तब पता चलता है ना, तब आप चयन करता हूं कि सोच से बाहर नहीं गए हैं, आप शेल में ना जाएं, बिकॉज अब आपके हाथ में सिर्फ आपका बैट है एंड यू हैव टू गो आउट देयर एंड मेक श्योर दैट बैट डज ऑल द टॉकिंग. क्योंकि अंत में जब आपका चयन होगा ना, और क्लीशेड सेइंग कि भाई हाथ में बैट है, दैट बैट हैज टू डू द टॉकिंग, ओनली दैट्स व्हेन यू गेट picked back into the side as well. अगर किसी की वजह से आप छूट गए हैं, अगर आप अपने परफॉर्मेंस को दिनेश कार्तिक के साथ तुलना करते हैं, so he's been outstanding. So for you to see where you are, you have to go out there and put your best foot forward and say कि जी ये मेरा जवाब है, अब आप मेरे को नहीं भुला सकते. That's the only thing. If I was advising him at this moment, tell him forget something that is not in your hand, not in your control.
You go out there and look to do what is in your control to the best of your ability. That's the important aspect. All right, we've got an update. Gujarat has won the toss and they have decided to bowl first. और मैं आपको बता दूं कि गुजरात की एक स्टैट है कि जितनी बार वो चेजिंग कर रहे हैं, आउट ऑफ 7 टाइम्स 6 टाइम्स वो जीते हैं. सो दिस पर्टिकुलर चॉइस इज वेरी मच. मैं आपको एक स्टैट बताता हूँ. राजस्थान रॉयल्स शुरुआत में ना वो स्कोर को डिफेंड करने में उन्होंने महारत हासिल की है, तो ये मुकाबला बड़ा मजेदार रहेगा. मजा बहुत आने वाला है. Okay, it's Gujarat versus Rajasthan. Here's an update. Gujarat has won the toss, elected to bowl. Okay, with that, we will again talking about that particular stat that we were seeing. वैसे interestingly जो हमने अभी भी stat देखा, उसमें से जितने भी Indian batters थे, उनमें से कोई भी pick नहीं हुए South Africa series के लिए. I mean, we can just take a look at that again. पृथ्वी शॉ थे वहाँ पर. I think. I mean, if we can just take a look at this. Yeah, here we go. So Rahul Tripathi, Prithvi Shaw, and Sanju Samson. I think Rahul Tripathi has been, थोड़ा सा मुझे I felt sad for him क्योंकि जिस तरह से उन्होंने खेला है, जितनी कंसिस्टेंसी उन्होंने दिखाई है, I was a little disappointed कि he was not picked. संजू सैमसन के लिए अगर if I have to talk, Ridhima, if you talk about Sanju Samson before the tournament, what made him not being selected consistently in Indian side was his inconsistency. सबको पता है कि he scores well at the start of the tournament, then he fizzles out. And what's the difference this season? Your answer would be the same. It's pretty much the same. With the kind of talent, with the kind of जितनी ability है, he's not performed. And he bats at number 3, number 4. He bats at the best possible position. And he's one of those players, every year in, year out, we should see him around that 500, 600 run mark. And that has not happened over a period of years. So like Nikhil said, he needs to forget that. And these are the most important games going forward. If he performs in these games and shows that, he's there, he can win games, in such an important part of the tournament, I think the selectors will take notice. It's not the end of the road for him. तो मुझे ऐसा लगता है कि he needs to stand up. That risk factor that we talk, in between our shows, a lot of times he takes so much risk. He gets that start, he shows a lot of promise, but he gets out. He doesn't get that big score. So I think he needs to do that. About time, because I feel he needs to be there. वो ऐसे player है कि he needs to be in that Australia, in the T20 World Cup. That's right. Interestingly, so there is, yeah, one change for Gujarat, actually talking about the match. Yeah, one change for Gujarat that we have, and talking about the match that we have today, Gujarat and Rajasthan. Gujarat toss जीतने के बाद they've elected to bowl. एक change है, Lockie Ferguson out, Alzari Joseph in. Nikhil. I'm a little surprised. या तो उनका निगल है, because अगर याद हो तो शायद फर्गसन उनसे पहले खेल रहे थे, जो अनुभव है, और अगर गलत नहीं हूं तो ये उनका एक होम ग्राउंड भी होता था. सो कुछ हुआ होगा, इसीलिए शायद फर्गसन की जगह अल्जारी जोसेफ को खिलाने को देख रहे हैं. बट विच इज, वो भी तेज गति से गेंदबाजी करते हैं, सो कुछ हुआ होगा अभ्यास के समय, और मे बी जस्ट कैरिंग अ लिटिल निगल. बट गुड टू सी वहां पे एटलीस्ट साई किशोर इज आल्सो देयर. बट until unless it wasn't a niggle, I would have literally played Ferguson before Joseph. All right, so then that is the only change. और राजस्थान में कोई change नहीं है. Given the overcast, given the conditions, I think किसका pace attack आज ज़्यादा काम में आएगा? I think दोनों प्रसिद्ध कृष्णा, Trent Bolt, Obed McCoy, so they are pretty good. उसके अलावा with Hardik bowling, you would say कि Gujarat Titans bowling attack is a little bit better. They've got 4 options, so I would go towards Gujarat Titans a little bit more. Okay, so pace versus spin. Eden Gardens के ये stats हैं. तो 154, 150 innings, pace versus spin, 451 wickets, 335 in spin. Average is 31.36, 26.74, and an economy of 8.23 by paces, 7.58 by spin. But रिद्धिमा, ये आंकड़े जो है ना, ये चेंज हो जाएंगे, क्योंकि कल भी बारिश हुई, आज भी क्लाउडी रहेगा. ये आंकड़े बदल जाएंगे, ये जो विकेट्स हैं ये आंकड़े बदल जाएंगे. कल भी बारिश थी, आज भी जिस तरीके से थोड़ा सा वो नमी का माहौल बना हुआ है,
So I won't be surprised कि the pacers come and get some maybe magical spells with the new ball. So won't be surprised क्योंकि जो माहौल बना हुआ है मॉइस्चर Correct. का अराउंड, तो नया बॉल परेशान करेगा. Correct. And if you talk about trend ball, this is the most rightest condition for the man to be lethal. Because whenever there's overcast, the man comes firing from all cylinders. So this is the condition where you have to watch out for Trent Bolt. If I were you, I would make Trent Bolt the captain today on my fantasy. So I might just do that. Okay, all right. With that, yes, let's take a look at what the social media thing. This is Social Tracker powered by Sky247.net. ओह आए जरा देखेंगे किस तरीके के जोक्स और मीम्स बन रहे हैं यहाँ पर जब बारिश हो रही है. लेकिन ये है राजस्थान रॉयल्स डेस्टिनेशन प्लेऑफ स्टेटस अराइव्ड एब्सोल्युटली एंड यू हैव अराइव्ड इन स्टाइल माय फ्रेंड. You know what Gujarat could not do, you did it. You come in with a winning momentum. So well done on that. Rashid bhai, how's the Josh? Correct. ये जो है ना ये देखने में बड़ा मजा आएगा क्योंकि जॉस बटलर को काफी बार डिसमिस कर चुके हैं राशिद खान. और क्या आज फिर उनके अगेंस्ट वो कामयाब होंगे कि नहीं ये देखने लायक चीज है. टॉकिंग अबाउट टॉस हार के मैच जीतने वालों को टाइटंस कहते हैं, लेकिन आज अब टॉस जीत गए, आज आपको मैच भी जीतना है. आज हम टॉस जीत चुके हैं. ओके विद दैट मूविंग ऑन. गुजरात टाइटंस की तरफ से ट्वीट था एंड लेट्स टॉक अबाउट क्रिक tracker. No reserve day for IPL playoffs except final. Gujarat Titans go through to the finals if ground conditions remain unplayable as they ended at top position after the group stage in IPL 2021. That has been explained by Crick Tracker. What happens just in case the rains continue? Crick Tracker, can't wait to see you in RCB camp next year, AB. All right then. That's a tweet by Crick Tracker and this is not a prank. Okay, moving on with that very quickly to our next tweet that we have. Okay, that's all the tweets that we have. That's all the social media has been buzzing by. So there were some tweets there. Okay, then we've talked about Rashid Khan and how much do you weigh on the man? How many wickets do you think is the man going to pick up at Eden Gardens? Because who do you think is going to be his shikar, the first shikar? देखिए 2 विकेट तो मैं देख रहा हूँ और आई थिंक एक मैं हेटमायर को देख रहा हूँ और एक मे बी सैमसन अप फ्रंट. Yeah, up front. What about you, Vasim? Yeah, I think at least 2. मुझे ऐसा लगता है maybe संजू सैमसन and देवदत्त पडिक्कल, I would say those 2. All right. Where do you think the game would be won or lost? क्योंकि अगर हम डेथ ओवर्स की बात करें और बॉलर्स की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो फिर गुजरात हैव एन अपर हैंड देयर. वेयर डू यू थिंक द गेम वुड बी वन और लॉस्ट? आई थिंक जो कंडीशंस जो समझ में आ रहा है, जो हम लोग वी आर नॉट देयर, बट जो बारिश का माहौल है ना, वो पता चलेगा पावर प्ले में आपने कितनी विकेट गंवाए. क्योंकि जैसी बॉल कुछ हरकत करना बंद कर देगा तब आप देखेंगे कि आप बाकी के वो 14 ओवर किस तरीके से कैपिटलाइज करने को देख रहे हैं. अगर आपकी 3 या 4 विकेट शुरुआत में गिर गई वो शरारत भरी गेंदबाजी के चलते, देन एज अ टीम यू आर ओनली लुकिंग टू प्ले कैच अप, तब थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है. तो आई थिंक वो पावर प्ले बड़ा जरूरी रहेगा. वो पहले 6 ओवर ना आपको बड़ा फर्क डालेंगे कि वो अच्छा कौन खेलता है पावर प्ले. Okay, Vasim, let me tell you the average score for batting first teams at Eden Gardens is 160. जी हाँ, बिल्कुल. आई थिंक पावर प्ले विल सेट द टोन मेरे हिसाब से. इट्स अ हाई स्कोरिंग ग्राउंड, आउटफील्ड फास्ट होता है, प्लस बाउंड्रीज बहुत मैसिव नहीं. ईडन गार्डन्स में बाउंड्रीज प्रीटी इजीली, आउटफील्ड बहुत ही फास्ट है. बट अगेन पावर प्ले में कैसे बॉलिंग करते हैं, गुजरात विल बी बॉलिंग और उनकी बॉलिंग हैज बीन देयर स्ट्रेंथ. तो मुझे लगता है कि पावर प्ले में इफ दे गेट two or probably more wickets, I think they'll put a break on Rajasthan Royals. So वो वहाँ पर अगर if Rajasthan doesn't lose a lot of wickets at the start, then you will see a great game coming up. Indeed. All right. So very quickly, prediction time. Nikhil, who are you going for, Gujarat or Rajasthan? If our man serves it piping hot, then of course he's my one man changing. Otherwise, let me go with Gujarat. Let's go. But my main thing, if he serves it hot, then you know where it's going.
But that's who you already decided in your fantasy team. According to you, you're serving it hot, man. Yeah. I think I'll go for Rajasthan, irrespective of George Butler, what he serves. I'll still back Rajasthan Royals. All right then, whatever is the food, the man's going for Rajasthan. एक poll किया था हमने. आज जरा आपको सवाल दिखाए और poll के results दिखाए. This is what we asked. Did Sanju Samson deserve a place in the Indian T20 side for the South Africa series? 77% say yes, 23% say no. So 77% go for Sanju Samson's favor. Having said that, here's wishing Sanju Samson all the best. Go ahead and play your best game. And may your team come out on top, as Wasim is, of course, going all guns blazing for Rajasthan. And so is Nikhil. Only, no, you're going for Gujarat, you said. You're going for Gujarat. You're still in double minds where Badal is going to serve it hot or no. All right, with that, let me remind you all कि दोनों ही teams के पास एक और चांस है, एक दूसरा मौका है. तो आज जो ये टीम्स खेलेंगे थोड़ा प्रेशर भी होके खेलेंगे, लेकिन सवाल ये है कि सबसे पहले फाइनल्स में जगह कौन बनाएगा. Well, Gujarat has had an interesting story because, critics had written this team off even before the first ball was bowled. Secondly, you've got Rajasthan, 2008 में championship जीते थे. एक बार फिर इनके पास मौका है. बहुत ही interesting match होने वाला है. वो भी अभी historic Eden Gardens. What are you waiting for? Let's go watch the match. Thank you so much, gentlemen. Thanks a lot for joining in. And we will see you post the match.